Okay, so now is the turn to discuss what is called as F cut set analysis. We call that as F cut set analysis, or sometimes you also call it as branch formulation. And it is actually the counterpart of the chord formulation or the F circuit analysis which we have done. So there we were dealing with the KVL equations or the mesh equations, therefore we were interested in link currents. Here we will be interested in tree voltages. So you can say that the tree voltages and link currents. ट्री वोल्टेज का मतलब है आई वांट टू कन्वे कि जो ब्रांच के वोल्टेजेस हैं, सो द ब्रांच वोल्टेजेस एंड द लिंक करंट्स आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स okay, so these are independent variables. Fine. In branch formulation we derive equations in terms of tree voltages only. So in branch formulation derive equation in terms of, so you can write here, in terms of branch voltages only. Remember, when we were doing circuit formulation या F chord formulation, उसमें we were dealing with the chord currents only. Here we are dealing with branch voltages only. Okay. So in a way I can say that I am going to do some sort of a node analysis. Okay, I can write here. I am actually going to do some sort of node analysis. Fine. So actually I am going to derive voltages in terms of currents. अब आपको शायद ध्यान हो when we were doing node analysis earlier, तो कुछ चीज़ें थी जो हमें याद करनी थी, जैसे it will not allow current voltage sources, it only allows current sources, it will only allow admittances, it will not allow impedances, like that. Okay. So actually we can say that our branch formulation that's an airplane. Branch formulation is analogous to node analysis. But कोई difference है, एक छोटा सा difference है जो हमें याद रखना होगा. So सबसे पहली चीज that when you are doing branch formulation, you need admittances only. So still you are dealing only with admittances and not impedances. You need admittances only. Fine. केवल admittances allowed. Next thing is that when you are doing branch formulation, so I can write that branch formulation allows both voltage and current sources. This is a big thing क्योंकि node analysis में voltage sources allowed नहीं थी. So branch formulation allows both V and I source. ठीक है? Whereas node analysis में it was not allowed. ठीक है? So I can say that node analysis allow only current source. So you can write that node analysis या node pair analysis allows only
करंट सोर्स या आई सोर्स। तो ये दो इक्वेशन या दो इंपॉर्टेंट फीचर्स या प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग ब्रांच फॉर्मुलेशन हमने यहाँ लिख दी है, विच इज सॉर्ट ऑफ अ नोड एनालिसिस। एक और चीज जो हमने लास्ट टाइम कॉर्ड फॉर्मुलेशन या एफ सर्किट एनालिसिस के वक्त की थी, वो क्या थी? वो ये थी कि मैश एनालिसिस केवल प्लेनर नेटवर्क पे लगता है, जबकि सर्किट फॉर्मुलेशन नॉन प्लेनर नेटवर्क्स पे भी लगता है। तो सेम थिंग इज वैलिड फॉर दिस आल्सो। ओके, although I'm not cutting it. The third thing is that it will give you actually V minus 1 plus NV equations. NV equations. और ये equations किस में होंगी? There will be V minus 1 plus NV equations voltage वाली होंगी, जहाँ NV जो है, this NV is number of voltage sources. ठीक है, V minus N, V minus 1 plus NV equations. Okay, so that's how we have actually it should be let me make a correction, that not a positive sign but a negative sign, क्योंकि जितनी independent voltage equations आएंगी उतनी total equations में से वो कम हो जाएगा, तो there is a mistake, make it a correction here. So for F cut set analysis, जिसका कि दूसरा नाम ब्रांच फॉर्मुलेशन भी होता है, हम ट्री वोल्टेजेस में सारी इक्वेशन लिखेंगे, और वो ट्री वोल्टेजेस में सारी इक्वेशन लिखने के बाद कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होंगी, दैट जो सर्किट है वो इम्पीडेंस फॉर्म में ना होकर एडमिटेंस फॉर्म में है। दोनों अलाउ कर सकते हैं वोल्टेज या करंट सोर्सेस, लेकिन नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स का ट्रैक हमें रखना होगा। टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस बनेंगी V minus 1 minus NV। पहले V minus 1 थी केवल, अब NV और इक्वेशंस इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की वजह से आएंगी, वो भी हमें रिमूव करना है। ओके, दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। We'll continue in our next. जहाज अभी भी जा रहे हैं।